Chapter 5 Introduction to Flash cs6. Your aim to learn about starting Flash cs6 tools panel, saving a Flash file, exciting Flash, the Flash workshop, creating a new Flash documents, opening a Flash file. ओके तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. फ्लैश इज़ अ वेरी यूजफुल एप्लीकेशन यूज्ड इन मल्टीमीडिया ग्राफिक्स प्रोग्राम्स. इट इज़ यूज्ड टू create animation, games, cartoon, text graphics and other special effect. It also an effective tool that designer use to create interactive presentations, animation and movies. In this chapter we will learn some basic of the Flash Professional cs6 application and its interface. Starting Flash cs6. When you first launch Flash, the first thing you see the welcome screen. Okay, look at here, see a welcome screen. एंड स्टेप फर्स्ट है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. ओके, स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए. स्टेप 2 है क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. स्टेप 3 क्लिक ऑन एडोब फ्लैश cs6 प्रोफेशनल. द फ्लैश वेलकम स्क्रीन अपर्स. लुक एट यस फ्लैश वेलकम स्क्रीन. ये रहा इस तरीके से. ओके, आगे है द फ्लैश वर्क स्पेस. लेट्स लर्न अबाउट द मेजर कॉम्पैक्ट्स ऑफ द फ्लैश cs6 वर्क स्पेस. स्टेज, मेन्यू बार, पेस्ट बोर्ड, लाइब्रेरी पैनल, टूल्स पैनल, प्रॉपर्टीज पैनल्स, टाइमलाइन पैनल्स, फ्लैश वर्कशॉप. लुक एट हियर, इस तरीके से है फ्लैश वर्कशॉप. Okay, stage. Let's know more about them. Stage, to white rectangular area of Adobe Flash Professional CS work page is called stage. The object you place on the stage will appear in your published movie. The object placed in the paste board, the gray area around the stage. Look at this. इस तरीके से ग्रे एरिया दिखाई देगा आपको अराउंड स्टेज के आसपास. विल नॉट अपर इन द फिनिश्ड मूवी बट यू कैन प्लेस ऑब्जेक्ट दैट यू वांट देम टू अपर ऑन द स्टेज. टाइमलाइन पैनल. Timeline panel. The timeline panel is used to control the image and in your Flash document. In the timeline is divided into frames. Frames is a single step of animation or a picture of the Flash timeline. In the timeline you work with these frames to organize and controls the contents of your documents. You place frames in the timeline in the order you want the object in the frames to appear in your finished content. Layers in the timeline panel provides a way to organize the elements of your movie. You can draw and edit objects on one layer without affecting object on other layers. Layers control the stacking order of a project. The order moves from top to bottom, so object display in front are on the top layer while object display in back are on the bottom layer. This allows you to place object in front or behind or one another. To change the other order of layer, drag the layer name to a new position. The layer control upper on the left side of the timeline panel. Each layer has an option for hiding and showing the layer, looking it and displaying it contains as outlined. So okay,
सो ये रहा टाइमलाइंस. लेयर्स, साइड शो हाइड लेयर, मोशन एडिटर, लॉक अनलॉक लेयर, प्ले हेड. सो insert layer folder, delete layer, timeline, current frame rate, elapsed time, timeline panels. look at here. ये रहा, इस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा. एक्शन, माउथ, नोज, लेफ्ट आई, राइट आई. Panel it provide easy access to control that help you work with the content in your documents. By default, the properties panel and the library panel are docked to the right side of the workspace. Any available panel can be opened by selecting it in the window menu. By default, several panels are collapsed to make them easy to open while reducing clutter in the workspace. To open and close the panels, click their icons in the left section of the panels docket. Okay, look at here. Panels menu. यहाँ पे दिखाया गया है प्रोफाइल, डिफॉल्ट, पब्लिक सेटिंग, टारगेट, फ्लैश प्लेयर्स, स्क्रिप्ट, पैनल्स. ओके. टूल्स पैनल. द tools in the tools panels let you draw, paint, select and modify artwork as well as change the view of the stage. The option area at the bottom of the tools panel lets you modify features of the tool you have selected. If the tools panel is not visible, you can display it by selecting tools option from Windows menu. To select a tool, just click it. Properties for the selected tool appears in the properties panels. look at here. Okay. हाँ, क्लिक इंडिया में देखते हैं. To open a tool, you can also use the shortcut key show in parentheses in the tool tip that appears when you place the mouse pointer over a tool for a few seconds. Creating a new Flash documents. Look at here. Flash tool panel किस तरीके से दिया गया है यहाँ पे. पूरा ये रहा. सिलेक्शन, सब सिलेक्शन, 3D rotations, free transform, lasso, pen, line, text, oval, pencil, deco, drawing, brush, paint bucket, bone, eraser, eyedropper, zoom, hand with pictures है, आप यहाँ पे देख सकते हो. stroke color, fill color, snap object, smooth, strange, option box. इस तरीके से पूरा फ्लैश टूल पैनल्स दिया गया है. ये रहा इस तरीके से. ओके. Creating a new Flash document. To open a new Flash document, follow these steps. Step 1, click on File menu. File menu पे जाके आप क्लिक कीजिए. Step 2, click on the new to open new document dialog box. Okay. Step 3, select Action Script 3.0 from the type list. Step 4, click on OK button. Creating new Flash document. The shortcut key to create a new Flash document in Ctrl+N. Okay. New document dialog box. Look at here. Action script. Saving a file. फ्लैश फाइल, किस तरीके से फ्लैश फाइल को सेविंग किया जाएगा. व्हेन यू हैव क्रिएटेड सम ड्राइंग्स इन फ्लैश, यू नीड टू सेव it so that you can use it later. To save a flash file, follow this step. आपको अगर बाद में अगर अपनी फाइल को देखना है, चेक करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे. स्टेप 1 है क्लिक ऑन द फाइल मेनू. स्टेप 2 क्लिक ऑन सेव टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स. स्टेप 3 एंटर अ नेम फॉर द फाइल इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स. स्टेप 4 क्लिक ऑन सेव बटन्स. लुक एट हियर, यहाँ पे दिया गया है सेव एज अ डायलॉग बॉक्स. यहाँ पे आपने फाइल नेम दिया है एंड सेव एज में जाके आप क्लिक करके यहाँ पे फाइल नेम एंड सेव एज अ टाइप, कौन से टाइप की फाइल है,
और यहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हो सेव करके। ये फाइल को आप बाद में भी खोल के चेक कर सकते हो। The shortcut keys to open save as dialog box is Control plus S. नेक्स्ट है ओपनिंग अ फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल ओपन कैसे की जाएगी? ओपन यू हैव सेव्ड अ फाइल इन अ फ्लैश, यू कैन ओपन इट लेटर बाय फॉलोइंग दिस स्टेप। स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल मेनू। Step 2, click on open to reach the open dialog box. Step 3, navigate, locate and select the file to be opened. Step 4, click on open button. ओपन बटन्स यहाँ पे है। ओपन डायलॉग बॉक्स ये रहा। इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी आपको दिखाई देगी। ओके, द शॉर्टकट की टू रीच ओपन डायलॉग बॉक्स इज कंट्रोल प्लस ओ। Exiting flash. After finishing work in a flash, you need to close the software. You can do it by 4 different methods in a flash cs6. These are: click on exit from file menu, or press Ctrl plus Q keys, or press Ctrl plus F4, or close button. Click on the close button on the top right corner of the flash window. All these 4 methods will close Adobe Flash cs6. Robot Flash is a very useful application used in multimedia graphics programs. Flash Workshop has many components: stage, properties, panel, tools, library, timeline, option box. It's the Flash cs6 add the action play to all the saved file to link these files with the software.